10th chapter Bhagavad Gita. We will chant from 1 to 10 slowly. Om Shri Paramatmane Namaha. अथ दशमोऽध्यायः. श्री भगवान् उवाच ऊय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुः सुरगणाः प्रभवन्न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानम् असम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावः भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाताः येषां लोक इमाः प्रजाः एतां विभूतिं योगञ्च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवः मत्यः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् उधा भावसमन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मामुपयान्ति ते. Clear? Srimad Bhagavad Gita 1 to 10, but from 8 to 11 means 8, 9, 10, 11, those slokas are really very important for our life. Now 11th sloka. Tesham evanukampartham. You should put Anuswara. Tesham evanukampartham ahamajnanajam tamaha नाशयाम्यात्मभावस्थः नाशयाम्यात्मभावस्थः नाशयामि आत्मभावस्थः
नाशयाम्यात्मभावस्थः, ओकार को काट करके विसर्ग लगा दीजिए। ज्ञानदीपेन भास्वता, ज्ञानदीपेन भास्वता। क्लियर? तेषाम् एवानुकंपार्थम् अहमज्ञानजं तमः। You can write it in the first line. तेषाम् एवानुकंपार्थम, for your betterment, better chanting, आपके सुविधा के लिए मैं ये कर रहा हूं। उसके बाद स्प्लिट कीजिए, उसके बाद लिखिए अहम अज्ञानजम तमः, बाद में नाशयाम्यात्म भावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वता। Once more. तेषाम् एवानुकंपार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम। अर्जुन उवाच, अर्जुन उवाच नहीं, हाँ, अर्जुन उवाच। क्लियर? परमं ब्रह्म परं ब्रह्म परं धाम, परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्, पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यं, पुरुषं शाश्वतं दिव्यम। उधर दिव्यम माँ के नीचे हलंत लगा के स्प्लिट कर दीजिए। नेक्स्ट, देन आदिदेवमजं विभुम, आदिदेवम कर दीजिए, माँ के नीचे हलंत लगा दीजिए। आदिदेवम अजम विभुम। क्लियर फॉर एवरीवन एल्स? परम ब्रह्म परम धाम। हिंदी भाषियों, ये परम ब्रह्म परम धाम नहीं। That is the main mistakes are done by the Hindi spoken person. Param Brahm, Param Dham. Please, no, no, no. Param Brahma, Param Dhama, Pavitram Paramam Bhavan, Purusham Shashwatam Divyam, Adidevam Ajam Vibhum. Clear? Now 13th sloka. आहुस्त्वा मृषयः सर्वे, आहुस्त्वा मृषयस्, विसर्ग की जगह पर सकार होगा। क्लियर? आहुस्त्वा मृषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा, देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः, असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे,
स्वयं चैव प्रविशि मे आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा देवर्षिर्नारदस्तथा एक्चुअली देवर्षिः नारदः तथा, लेकिन संधि करके देवर्षिर्नारद देवर्षिर्नारदस्तथा देन असितो देवलो व्यासः असितो देवलो व्यासः स्वयं स्वयं चैव प्रविशि मे स्वयं चैव प्रविशि मे क्लियर आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव प्रविशि मे क्लियर 13 श्लोका आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव प्रविशि मे clear for everyone else thank you now 14th one as it is written you can chant and you can break and chant how sarvam etad ritam manye you can chant it okay sarvam etad ritam manye or sarvam etad ritam manye you can chant both sarvam etad ritam manye that will clear the meaning to you sarvam etad ritam manye Yanmavadasi Keshava Yanmavadasi Keshava Nahite Bhagavan Yaktim Nahite Bhagavan Yaktim Vidurdevana Danavaha Vidurdevana Danavaha clear together Sarvametadritam manye Yanmavadasi Keshava Nahite Bhagavan Yaktim Vidurdevana Danavaha clear Swamiji, in the first line, Yan Mam, Mam, we want to read it. We'll just read Mam, Mavadasi. Yanmavadasi Yanmavadasi Keshava. Yes. Yanmao. Okay, sound little. Because Anuswar is there, that is why Anuswara ka uchcharan wa jaise hoga. Okay. If you chant Yanmam, that is also correct. Okay. But thank you. When I teach you the most perfect one. Okay. Clear? Now, 15th one. Svayamevatmanatmanam
स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं व्येत्थत्वं। तो दोबारा उच्चारण होगा त्वम का। देखिए मेरा प्रोनाउंसिएशन सुनिए, वेत्थ त्वम, बट मैं प्रोनाउंस कर रहा हूं वेत्थत्वम। वेत्थम व्येत्थत्वम पर पुरुषोत्तम स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम। भूत भावन भूतेश, भूत भावन भूतेश, देव देव जगत्पते, देव देवो देव देव जगत्पते। क्लियर? स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश, देव देव जगत्पते। क्लियर? once more, स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश, देव देव जगत्पते। Clear? Thank you. Now 60. वक्तुमर्हस्य शेषेण। वक्तु, एक्चुअली वक्तुम अर्हस्य शेषेण भी आप बोल सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगे जो नहीं जो लिखा है वो बोलने से मेरा सुविधा ज्यादा होगा, यू कैन डू वक्तुमर्हस्य शेषेण। वक्तुम अर्हस्य शेषेण, बोथ आर करेक्ट। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः, दिव्या ह्यात्मविभूतयः, याभिर्विभूतिभिर्लोकान्, याभिर्विभूतिभिर्लोकान्, इमां स्वां व्याप्य तिष्ठसि, इमां स्वां व्याप्य तिष्ठसि। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः, याभिर्विभूतिभिर्लोकान्, इमां स्वां व्याप्य तिष्ठसि। Clear? Anyone has any doubt? Okay. वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या, वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः, याभिर्विभूतिभिर्लोकान्, याभिर्विभूतिभिर्लोकान्। Then iman swam. Okay, you should write it. Otherwise, at the time of chanting with me, you will feel everything is going well. Then when you will start practicing at your home, you will see, अरे छंदस नहीं मिल रहा है, स्वामी जी शायद गलत सिखा है। This is the first thing. हाँ, विश्वास कीजिए। You know, in छांदोग्य उपनिषद,
श्वेतो केतु का पिताजी ने उनसे पूछा, तुमने सीखा है गुरु के पास ये जगत की कारण क्या है? तो उन्होंने तुरंत उत्तर दे दिया, जे मेरा गुरु ने नहीं सिखाया, शायद वो जानते नहीं। Yes, this is the thing, when a student make mistake, first thing he or she never thinks or consider that she is doing wrongly or she couldn't grasp it. She or he tells, my teacher has not taught me in this way. Maybe he doesn't know. So, and another tragedy of the teacher, when you will chant wrongly, everyone will ask you who has taught you. Believe me, I have faced this problem. If you chant correctly, everyone will clap. Oh, what a wonderful Gita chanting. If you make a little bit of mistake, first question, who has taught you? From whom you have learned? So please chant, please listen to it correctly. Clear? Vaktum arhasya sheshena sheshena divya hyatma vibhutayah yavir vibhuti vir lokan imam swam yapya tishtasi. Clear? 17th. Katham vidyam aham yogin. योगी न के नीचे हलंत लगा दीजिए. कथम विद्याम अहम योगिन, उसके बाद स्प्लिट कीजिए. देन त्वाम सदा परिचिंतयन. क्लियर? कथम विद्याम अहम योगिन त्वाम सदा परिचिंतयन. कथम विद्याम अहम योगिन त्वाम सदा परिचिंतयन. केषु केषु च भावेषु केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया. चिन्त्योऽसि भगवन्मया. कथं विद्याम अहं योगिन. This is the actual pronunciation. Listen, don't think that Swamiji is chanting something different. Katham vidyam ahai yogin tam sada parichintayan keshu keshu cha bhaveshu chintyosi bhagavanmaya. Clear? Clear to everyone else? Raise your hand, please. Okay. Anshu Amma, any doubt? Just tell no, no need to unmute. Okay. Thank you. Thank you. Now, 18th. Vistarenatmano yogam. Split. Vistarenatmano yogam. Here yogam clearly, yogam clear होगा क्योंकि योगम हम लोग ब्रेक कर रहे हैं. विभूतिं च जनार्दन
भूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम् शृण्वतो नास्ति मे मृतम् विस्तरेणात्मनो योगम् भूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्. Clear? Any doubt? Anyone else? Yes, Sandhya Amma. Swamiji, 17th one, can you please clarify this yogin twa? I cannot follow. Amma, it is Sandhi. According to Panini Sutra, the sutra is, I will no need to know sutra, but yogin and tvam, when it is together, if you do sandhi, it will be yogin swam. Sakara comes. Okay. But when we are pronouncing it, when we are chanting, yogin na tatha dadha na. Yeah. Na के बाद हलंत लगा दीजिए. And sir will be dropped. Yes. Okay. Okay. Only twam, not stwam. Okay. Thank you, Swamiji. Yes. We will chant 19th. Shri Bhagavan Uvacha Hantate Kathayishyami. One thing I can do. We can stop over here and we can practice. What? How many of you want that? Raise your hand. Usha Amma, Rekha Amma, Sarla Amma, Nikita, Manju Amma, Shreya Amma, Jetli Amma, Pramila Amma, Karuna Amma. Oh, Anshu Amma. Only Sangeeta Amma doesn't want. Oh, you want. Okay. So we are stopping over here and we will start practicing. Okay. That will be better. Hari Om Tat Sat.